Hello friends, this is Aman Khan from iPro Realty. I'm a real estate broker. This video is a little bit about the educational video. Today I'm just going to talk about specifically regarding the inspection, and I'm going to talk in both Urdu and Hindi both, so people from the different community can also understand what I mean to say. Okay? Yeah. So आज जो हम बात करेंगे बात करेंगे होम इंस्पेक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, जब आप घर परचेज़ कर रहे होते हैं तो इन पॉइंट्स की जो बात कर रहे हैं, ये थोड़ी सी एजुकेशनल वीडियो है. इसको ज़रूर आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर कॉल कर लें. मेरे वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं teamaman.com, और होम इंस्पेक्शन की वहाँ पे भी बहुत सारे टिप्स हैं जो आप वहाँ पे देख सकते हैं, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 6472800201 पे. लेकिन चलें, लेट मी शेयर some information about the home inspection. Exterior, what should you see in terms of the exterior? So when you purchasing a house, just make sure that what kind of exterior it has. It is a brick exterior, it's a stone exterior, it is a stucco exterior, or it is a vinyl exterior. So you just have to make sure that what kind of exterior you have. Okay, and in terms of the width of your lot, okay, width of your property, depth of your property is very, you have to be very careful. Okay, those all the information you should have. Okay, if you don't have, then please ask your agent. Okay, exterior you can always go and say it, but in terms of the depth and width, you always have to ask with the agent. Okay, structural element, foundation. It's come whether it's a foundation and a forming condition, right? It's very you have to go make sure the foundation condition is good or not. Make sure that whenever the time come for the inspection, like whenever the inspector is coming to inspect your house, जब भी इंस्पेक्टर आता है आपके घर को इंस्पेक्ट करने के लिए, तो जस्ट मेक श्योर कि वो इंस्पेक्टर जो है वो उसके साथ आप भी हों, ताकि वो हर चीज़ को पॉइंट आउट करे, आपको हर चीज़ बता सके कहाँ पे मेजर इशू है, कहाँ पे स्मॉल इशू है, वेयर इज़ अ माइनर इशू, वेयर इज़ अ बिगर इशू, सो मेजर इशू. सो मेक श्योर दैट यू स्टे विद द इंस्पेक्टर ऑल द टाइम थ्रू आउट द इंस्पेक्शन ऑफ दैट हाउस. ओके, द रूफ कंडीशन तो इज़ वेरी, जब छत की बात कर रहे हैं इस वक्त, जब always watch, always make sure that it has the proper roofing system. Okay, because the roofing is one of the very expensive cost of the house. If suppose if the roofing is not good, right, you can always negotiate with the seller in terms of the price, right? So negotiate, what kind of installation it has. Ask your inspector to go and see the roofing, all the shingles. It is okay or not, right? So they can give you the proper picture, the condition of the shingles. Okay, जब भी आप बात कीजिएगा अपने इंस्पेक्टर को ज़रूर कहिएगा कि ऊपर जा करके ज़रूर जो है सीलिंग को शिंगल्स को ज़रूर जाके चेक करे, ताकि और उसकी कंडीशन आपको बताए, तस्वीरें लेकर के आपको दिखाए कि शिंगल्स की कंडीशन कैसी है. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि इट इज़ वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट है, वो इज़ वेरी एक्सपेंसिव होता है. उसकी जो रिप्लेसमेंट है हमेशा इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इज़ विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट $3,500, तकरीबन 3500 से लेकर के 4000 5000 समटाइम इट विल कॉस्ट यू. और इसी तरह से प्लम्बिंग, जो प्लम्बिंग है वो आज के हिसाब से है या नहीं है, ये पुरानी प्लम्बिंग है. आप कितने पुराना घर खरीद रहे हैं, 50 साल 30 साल 40 साल, बहुत वक्त पुराने घर आप ज़रूर परचेज़ कर रहे होते हैं, बट इट्स अपग्रेडेड हाउस, राइट? तो उसमें तमाम काम हुए होते हैं, राइट? सो जस्ट मेक श्योर कि व्हेन यू परचेजिंग ए हाउस, द एज ऑफ द हाउस, ठीक है, first of all. The number two, all the inspection when it's come to the plumbing and the electric work. So just make sure that you have the proper, all the things has been done as per today's city bylaws. And just make sure with the city as well whether it's okay or not. Especially when it's come to the electric system, like you also have to make sure that all the code and fuses and visible wiring and safety issues as well. And AMP is something called ampere. So it is a 100 ampere connection, or is a 200 ampere connection it has. Okay, so just make sure आप उससे ज़रूर पूछेगा कि ये 100 एम्पेयर वाले घर हैं या 200 एम्पेयर वाले घर हैं, तो मेक श्योर कि उसमें जो कनेक्शन है कौन सी, यू शुड नो अबाउट इट. हीटिंग, वेंटिलेशन एंड AC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव दी उसकी जो वेंटिलेशन है, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव द प्रॉपर वेंटिलेशन. उसमें AC जो है कितने पुराने हैं, उसके फर्नेस कितनी पुरानी है, कंडीशन कैसी है, क्या उसकी सर्विसेज होती है नहीं होती हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली जो है प्रीवियस जो सेलर है वो कितनी फ्रीक्वेंटली उसकी सर्विसेज करवाता है. जस्ट मेक श्योर कि ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी पता हो आपको, ठीक है. देन लॉन्ड्री रूम,
sometimes there is no ventilation in the laundry room, so make sure that you have the proper ventilation system sitting there. Okay, if not, then make sure that you get it one, or you ask. You can always demand the seller that why the ventilation system is not there. If not there, and if you really like the house, just make sure that ask the seller that to have one. Maybe he can hire somebody to have one ventilation system. तो इसका बहुत आप ख्याल कीजिएगा कि लॉन्ड्री रूम में वेंटिलेशन की ज़रूर वहाँ पे अरेंजमेंट होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो किसी को भी हायर करके जो सेलर है वो बनवा सकता है वेंटिलेशन सिस्टम, ताकि आपके ऊपर कॉस्ट ना पड़े आफ्टर यू परचेज द हाउस। ठीक है, घर के क्लोजिंग के बाद। बाथरूम वगैरह की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बाथरूम का जो मामला आता है इज़ वेरी एक्सपेंसिव कॉस्ट। ओके, सो मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ अ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, वेदर इज़ अ बाथ टब, शावर, sinks, toilet, and the ventilation and plumbing system is all working condition when it's come to the bathroom, all the bathroom. Suppose in a house you have 2 or 3 washrooms, just make sure that all of them is working properly. जब वॉशरूम की बात आए तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसमें तमाम चीज़ें जो है प्रॉपर काम कर रही नहीं कर रही हैं। बाथ टब है, शावर है, सिंक्स हैं, टॉयलेट है, वेंटिलेशन है, प्लम्बिंग सिस्टम इज़ वर्किंग ऑन नॉट प्रॉपरली। ठीक है, इसी तरह फायर सेफ्टी की जहाँ तक बात आती है, सपोज बेसमेंट है, ठीक है, आपके वहाँ फिनिश बेसमेंट है और कोई वहाँ रेंट पे रहता है, ठीक है, और वो वहाँ की फायर हैजर्ड ठीक नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो नीचे के जो तमाम जो सिटी कोड्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। क्या ये लीगल बेसमेंट है, बेसमेंट नहीं है, फायर हैजर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर इज़ ओके और नॉट, ये तमाम चीज़ों को चेक करना आपका काम है। आप ज़रूर इंस्पेक्टर के ज़रिए से प्रॉपर तरीके से उसको चेक करवाएं, और अगर इसमें किसी भी चीज़ की कमी है तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं सेलर से, ताकि वो जो है अगर ताकि प्राइस में कुछ आपको वो ब्रेक दे, और फिर आप खुद उसको सही करवाएं। लेकिन ये तमाम चीज़ें का सही होना बहुत ज़रूरी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेस्ट, you have, I mean, you just make sure there is no pest in the house, okay, like bed bugs and ants and different kind of pests. Okay, sometimes it's some kind of wild animal there in houses, some countryside houses, some there is snakes in the house. Okay, so very careful guys, make sure that you have a proper inspector who check each and everything. Okay, and if you have any kind of pest issue, just make sure that you ask the seller to hire somebody and get rid of all the pests, okay, before you purchase the house, before it's closing. Okay, make sure you put the condition. So regarding the inspection, अगर आपको कोई भी सवाल हो, if you have any question regarding the inspection, please call me. I have my own team member who's an inspector. He can always help you out. He can advise you properly. Thanks. Have a good one. Bye bye.